Hello bachcho, so let's read this question. Each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of the questions has four alternative choices, only one of which is correct. You have to select codes A, B, C and D given below. A. Assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion. B. Assertion is correct, reason is correct and reason is not the correct explanation for assertion. C. Assertion is correct, reason is incorrect and assertion is incorrect and reason is correct is option number D. Assertion की statement हमें दी हुई है the boiling points of aldehydes and ketones are higher than hydrocarbons and ethers of comparable molecular masses. And reason, there is weak molecular association in aldehydes and ketones arising out of dipole-dipole interactions. Now let us write the key concept of the question. Key concept of this question will be there are three important trends to be considered while figuring out the order of boiling points. So there are three important trends to be considered figuring out the trend figuring out the order of the boiling points. Of the order of the boiling points. Now let us see those three important points. वो तीन बातें क्या है जिससे हमारा boiling point इफेक्ट होता है. पहला है relative strength of four intermolecular forces. Intermolecular forces. तो पहले intermolecular forces जो होता है जो हमारा ionic force होता है it is the strongest force. फिर हमारा आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. उसके बाद आता है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस. एंड देन लास्ट हमारा सबसे वीक फोर्स होती है वो होती है वैन डर वाल फोर्सेस. वैन डर वाल फोर्सेस. So the influence of each of these attractive force will depend on the functional groups present. तो हमारे हर functional group के साथ अलग अलग forces आती हैं. So it will depend on the functional groups that are present. Now let us talk about the second one. हमारा फिर है boiling points increase with the number of carbons increased. Number of बेसिकली हम molecular weight के बारे में बात कर सकते हैं इसमें. Number of carbons. Second point होता है हमारा number of carbons. जितने ज्यादा कार्बन्स हमारे बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता जाएगा एंड देन उतना ज्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता जाएगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट व्हिच इज ब्रांचिंग. अब ब्रांचिंग जो होती है हमारी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट. मतलब जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन हमें जो दे रखा है. क्वेश्चन में हमें दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सो aldehydes and ketones are liquid and solid at room temperature. At room temperature. The boiling points of aldehydes and ketones are higher than that of our hydrocarbons and ether. The boiling point of aldehydes and ketones is higher than that of hydrocarbons and ethers. तो हमारे को यही स्टेटमेंट हमारी उसमें दे रखे हैं assertion में. सो हमारी assertion की स्टेटमेंट हो गई ट्रू. And ethers of comparable molecular masses. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन दैट ऑफ एथर्स एंड
ethers and hydrocarbons of comparable molecular masses, our assertion becomes true. Assertion is true. Now let us talk about reason. जो reason होता है इस चीज का, it is due to weak molecular association in aldehydes and ketones arising due to dipole-dipole interactions. In aldehydes and ketones, जो हमारी aldehydes and ketones में होती है उसमें dipole-dipole interactions होती हैं and we know that it is a weak interaction force, तो इसके कारण इसका boiling point higher होता है than ether and hydrocarbons arising out of the dipole-dipole interactions. तो हमारा रीजन भी सही है. Let us see the reason statement once again. There is a weak molecular association in aldehydes and ketones arising out of dipole-dipole interaction. तो हमारा जो reason है, it is also true. And जो हमारा reason है, it is correct explanation. तो हमारा option number A will be the right answer for the question. I hope you understood the question well. Best of luck.